Good morning, students. Today we are going to learn about diffusion. So, why we are learning today diffusion? Last time, if you remember, we learnt about plasma membrane. So, how this membrane acts, on what principle does it belongs, and it works. So, that is what we are going to learn today. Now, as you can see that on screen, we can see the diffusion, and there are some substances like carbon dioxide and oxygen which can move across the cell membrane. So in the center you can see this is the cell membrane, and these particles are moving across the membrane. So this process is known as diffusion. So how diffusion works? So if here also you can see here there are many particles. So all those particles are moving towards the right side. These particles are not moving towards the left side. So basically diffusion works upon the principle of higher concentration to lower concentration. Please don't forget these two terminologies are really important. Higher concentration to lower concentration. So basically through plasma membrane we have a movement of carbon dioxide and oxygen which is taking place through the cell membrane. Now before going to my next concept, I would like to make you understand one minute thing which we were subjected to learn in chemistry, but we will learn it when we start. So basically when you talk about any solution, so any solution is made up of two things. One is solute and other is solvent. So when you talk about solvent, solvent is the watery object. Watery matlab liquid object. And solute is something which you are adding in a lesser proportion. Or it can be solid, it can be liquid, it can be gas as well. So combinedly they make a solution. Like for example, if you make a sugar solution, then sugar is your solute and water becomes the solvent. So I hope you're clear with the concept of solute and solvent. So now we will learn about the second concept, which is osmosis. Water generally obeys the law of diffusion, but its movement मतलब कि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाने का जो प्रिंसिपल है वो ऑस्मोसिस से वो फॉलो करता है. मतलब क्या कि भाई द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. पानी का मूव करना फ्रॉम द परमिएबल मेम्ब्रेन उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. अब आप सोचोगे कि तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है, दोनों में चीज़ें मूव ही तो कर रही है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में. तो आई टेल यू, सी इन डिफ्यूजन वी हैव सोल्यूट. सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में, जबकि इन ऑस्मोसिस पानी मूव करता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में. कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन मूवमेंट चीज़ों की अलग है. एक में सॉल्यूट मूव करेगा, दूसरे में सॉल्वेंट मूव करेगा. सो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ ऑफ देम. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, what will happen if we put animal or plant cell into a sugar solution or a salt solution in water? So there are three possibilities. Now what possibilities are there? So if the medium of the surrounding has higher concentration of the water, like I'll tell you कि यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा है तो ये पानी इस सेल में जाएगा और ये सेल फूलता जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम सूखी ग्रेप्स, किशमिश जो बोलते हैं, वो पानी में रखते हैं तो सुबह अगर रात को रखा है तो सुबह कैसी स्वेल हो जाती है, कैसी बड़ी हो जाती है. मतलब उसमें बाहर के मेम्ब्रेन में पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, तो वो बाहर का पानी विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऐसे फिनोमिनन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन.